So hello friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master of English. पिला माने एटा गोटे गिफ्ट मो तरफरु साइंस पिला मानक पई साइंस पिला माने कहउतले सर बोटनी बायोलॉजी रो किछ क्वेश्चन करंतु तो बोटनी रो चैप्टर 1 रो 50 टा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हमें देखिबा ए वीडियो रे प्रथम चैप्टर जोटा होचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तमरो जो +2 सेकंड ईयर बोटनी बायोलॉजी रो अछि तार 50 टा प्रश्न हम आलोचना करबा। तो आरंभ करवा विलंब करवा नहीं। प्रथम प्रश्नटी होची कौन पिले व्हेन जाइनोसियम मैचेस फास्ट इट इज कॉल्ड डैश टू इफेक्ट क्रॉस पॉलिनेशन। ऑप्शन गुडी कहला ए प्रोटोजिनी, बी प्रोटांड्री, सी हेरकोगमी, डी यूनिसेक्सुअलिटी। ठीक उत्तर हबो इट इज कॉल्ड प्रोटोजिनी। ऑप्शन एटा होची ठीक उत्तर। 2 नंबर प्रश्न इन अर्निथोफिली द एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन आर डैश। ऑप्शन ए ants, बी birds, C snails, D rats. The correct answer is it is option B birds. Option B is the right answer. ठीक उत्तर। 3 नंबर प्रश्न zygote develops from dash cells of the embryo sac. Option A egg, option B synergid, option C antipodal, option D nucellus. 3 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हबो पिले ऑप्शन ए एक टा होची ठीक उत्तर। जीवा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्नटी कोन 4 नंबर प्रश्नटी होची फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। ऑप्शन गुडी कहला स्ट्रासबर्गर, बी मेंडल, सी नीच, ऑप्शन डी बोर। ठीक उत्तर 4 नंबर प्रश्न रो कोन पिले 4 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची स्ट्रासबर्गर। ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर। 5 नंबर प्रश्न ड्यू टू ट्रिपल फ्यूजन डैश इज फॉर्म। ट्रिपल फ्यूजन द्वारा कौन तैयारी होता है। ऑप्शन ए जाइगोट, ऑप्शन बी एम्ब्रियो, ऑप्शन सी एंडोस्पर्म, ऑप्शन डी जूस्पोर। 5 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची पिले एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी टा होची ठीक उत्तर। 6 नंबर प्रश्न द इनर मोस्ट लेयर ऑफ वोल लेयर इज डैश। ऑप्शन गुडी कहला ए टैप्टम, बी एपिडर्मिस, सी एंडोडर्मिस, डी एंडोथेसियम। 6 नंबर प्रश्न 6 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची टैपेटम। ऑप्शन ए होची ठीक उत्तर। जीवा 7 नंबर प्रश्न आलोचना करबा। 7 नंबर प्रश्नटी कोन पिले 7 नंबर प्रश्न हला इन ड्यू कोर्स ऑफ इवोल्यूशन इट इज इंटरेस्टिंग टू फाइंड दैट plants showing allogamy and their pollinators have evolved together. It is called dash. Option A co-evolution, B mutualism, C proto-cooperation, D commensalism. 7 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड को-इवोल्यूशन। ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर। जीवा परवर्ती प्रश्न 8 नंबर प्रश्न अछि मोबाइल स्क्रीन ऊपर तुम मन गपे बेले 8 नंबर प्रश्नटी कोन 8 नंबर प्रश्न हला कवरिंग ऑफ माइक्रोस्पोर्स टेट्राड इज मेड ऑफ डैश। ऑप्शन ए खेलोस, बी प्रोक्टोसेल्युलोज, सी स्पोरोपोलेनिन, डी नॉन ऑफ दिस। 8 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन ए खेलोस। 9 नंबर प्रश्न डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम टोटिपोटेंट pollen is called dash. ऑप्शन ए एंड्रोजेनेसिस, बी पार्थेनोकार्पी, सी इमस्कुलेशन, डी सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन। 9 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड एंड्रोजेनेसिस। ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर। 10 नंबर प्रश्न इन पल्सेस प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन डैश। ऑप्शन ए एंडोस्पर्म, बी कटिलेडन्स, सी पेरिकार्प, डी सीड कोट। 10 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज स्टोर्ड इन यस कटिलेडन्स। ऑप्शन बी होची ठीक उत्तर। 11 नंबर प्रश्न सीड कोट इज डेराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन ए पेरिकार्प, बी एपिकार्प, सी इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, डी न्यूसेलस। 11 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हबो इट इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल। ऑप्शन सी ता होची ठीक उत्तर। 12 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा। 12 नंबर प्रश्नटी कोन पिले व्हाट इज पोलेन ग्रेन कहले कोन। ऑप्शन ए माइक्रोस्पोर मदर सेल, बी मेल गैमेट, सी मेल गैमेटोफाइट, डी पार्शियली डेवलप्ड एम्ब्रियो। 12 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हबो इट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। ऑप्शन सी ता होची ठीक उत्तर। 13 नंबर प्रश्न द प्लॉइडी ऑफ टेस्टा एंड टैगमेन इज रेस्पेक्टिवली डैश। ऑप्शन ए NN, ऑप्शन बी 2N 2N, ऑप्शन सी 2N, D 2 2N। 13 नंबर प्रश्न
13 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड ऑप्शन बी 2n 2n 14 नंबर प्रश्न एंट्री ऑफ pollen tube through the salazal and is called ऑप्शन ए porogamy बी mesogamy सी basegamy डी syngamy 14 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज सी basegamy ऑप्शन सी टा होची ठीक उत्तर जीवा 15 नंबर प्रश्न पाखकू 15 नंबर प्रश्न कौन पिले 15 नंबर प्रश्नटी है which type of pollen grain are found in insect pollinated flowers option A hygroscopic option B light and sticky option C light and rough option D heavy and colored 15 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची light and sticky option B टा होची ठीक उत्तर 16 नंबर प्रश्न the aileron layers in maize grain is specially rich in dash option A starch option B lipid ऑप्शन सी एक्सिन्स ऑप्शन डी प्रोटीन्स 16 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम ऑप्शन डी इट इज प्रोटीन्स 17 नंबर प्रश्न द प्लांट पार्ट व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू जनरेशन वन विथ इन द अदर इज कॉल्ड डैश ऑप्शन ए जर्मिनेटेड pollen grain ऑप्शन बी एम्ब्रियो ऑप्शन सी अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑप्शन डी सीड 17 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑप्शन सी टा होची ठीक उत्तर जीवा 18 नंबर प्रश्न कौन पिले 18 नंबर प्रश्न है द फर्टिलाइजेशन इन व्हिच मेल गैमेट आर कैरिड थ्रू pollen tube इज नोन एज डैश ऑप्शन ए syngamy बी porogamy ऑप्शन सी सिफोनोगेमी ऑप्शन डी सेलेजोगेमी 18 नंबर प्रश्न होची ठीक उत्तर सी इट इज कॉल्ड सिफोनोगेमी सी टा होची ठीक उत्तर 19 नंबर प्रश्न aileron layer is part of dash option A endosperm B embryo C tegmen D testa 19 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्म ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर 20 नंबर प्रश्न व्हिच ऑफ दिस इज नॉट एसेंशियल फॉर एलोगेमी ए भितर कोटा एलोगेमी पई एसेंशियल नुह ऑप्शन ए सेल्फ स्टेरिलिटी बी डिकोगेमी सी हेरकोगेमी डी नॉन ऑफ दिस 20 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची पिले यस नॉन ऑफ दिस डी टा होची ठीक उत्तर जीवा 21 नंबर प्रश्न पाखकू 21 नंबर प्रश्न कौन पिले इट इज व्हाट stack with which ovule remains attached to the placenta is called option A funicle option B raphe option C hilum option D salada 21 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड फ्यूनिकल ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर 22 नंबर प्रश्न व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो sac becomes horseshoe shaped and the funiculus and micropyles are close to each other option A amphitropus option B anthropus option C sarcinotropus option D atropus 22 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम इट इज कॉल्ड एम्फिट्रोपस ऑप्शन ए टा होती ठीक उत्तर 23 नंबर प्रश्न स्टेट ओव्यूल आर कॉल्ड डैश ऑप्शन ए एंट्रोपस ऑप्शन बी कैमेलोट्रोपस ऑप्शन सी ऑर्थोट्रोपस ऑप्शन डी हैर्निट्रोपस 23 नंबर प्रश्न स्टेट ओव्यूल इज कॉल्ड ओव्यूल आर कॉल्ड डैश 23 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड ऑर्थोट्रोपस ऑप्शन सी टा होची ठीक उत्तर जीवा 24 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन पर अच्छी 24 नंबर प्रश्न कौन पिले कॉन्ट्रीवेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज डैश ऑप्शन ए डिक्लिनिंग ऑप्शन बी हेरकोगेमी ऑप्शन सी सेल्फ स्टेरिलिटी ऑप्शन डी क्लाइस्टोगेमी 24 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम क्लाइस्टोगेमी ऑप्शन डी होची ठीक उत्तर 25 नंबर प्रश्न जर्मिनेशन ऑफ pollen grain on the stigma is डैश ऑप्शन ए autogamy option B in vivo germination C in vitro germination D in situ germination 25 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम इट इज इन vivo germination option B 26 नंबर प्रश्न डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश ऑप्शन ए हैप्लॉइड न्यूक्लियस बी डाइप्लॉइड न्यूक्लियस सी ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस डी टेट्राप्लॉइड न्यूक्लियस 26 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम इट इज ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस ऑप्शन सी होची ठीक उत्तर 27 नंबर प्रश्न पाखक जावा 27 नंबर प्रश्न कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनली
analogous with other in the group? Option A, antheridium. Option B, archegonium. Option C, ogonium. Option D, ovule. 27 নম্বর প্রশ্ন। 27 নম্বর প্রশ্নর ঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি, ovule। 28 নম্বর প্রশ্ন। Coffee plant has chromosome number of 22 in its somatic cells. What is the chromosome number in the edible part of coffee seed? Option गुड़िक है ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 11। 28 नंबर प्रश्नर ठीक उत्तर होची 33, ऑप्शन बी टा होची ठीक उत्तर पिले। 29 नंबर प्रश्न अछि मोबाइल स्क्रीन उपरे तम मानक पई। 29 नंबर प्रश्नटी कोन? Which one of the following is surrounded by a callous wall? Option A, male gamete, B, egg, C, pollen grain, D, microspore, mother cell। 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्नर ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन डी, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। डी टा होची ठीक उत्तर। 30 नंबर प्रश्न। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। ऑप्शन गुडी कोन कोन? ए, the ovary wall develops into pericarp. B, the outer integument of ovule develops into tegmen. Option C, the fusion nucleus develops into endosperm. D, the ovule develops into seed। भूल कोटा? 30 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हबो बी, the outer integument of ovule develop into tegmen। बी टा होची ठीक उत्तर। 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न कोन पिले? राफे इज what is राफे? Option A, part of flower. B, funicle attached to ovule. C, rays formed by fumiculus on ovule. Option D, part of nucleus। 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम rays formed by fumiculus on ovule। सी टा होची ठीक उत्तर। 32 नंबर प्रश्न। Male gamete in angiosperm is produced by dash। Option A, generative cell। B, microspore cell। C, vegetative cell। D, tube cell। 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्नर ठीक उत्तर होची इट इज जनरेटिव सेल। ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर। 33 नंबर प्रश्न। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ माइक्रोफाइल इन एंट्रोपस ओव्यूल? ऑप्शन ए, अपवर्ड। बी, डाउनवर्ड। सी, राइट। डी, लेफ्ट। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्नर ठीक उत्तर होची इट इज डाउनवर्ड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 अच्छे मोबाइल स्क्रीन उपर तुम मान 34 टा कौन पिले? 34 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन एंजियोस्पर्म्स आर डाइप्लॉइड एंड ट्राइप्लॉइड रेस्पेक्टिवली? ऑप्शन ए, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म। बी, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड एग सेल। सी, पोलर न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डी, एंडोस्पर्म एंड एंटीपोडल सेल्स। 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंडोस्पर्म। ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर। 35 नंबर प्रश्न। Antithesis is a phenomenon which refers to dash। Option A, reception of pollen by stigma। Option B, formation of pollen। C, development of anther। Option D, opening of flower bud। 35 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम इट इज ओपनिंग ऑफ फ्लावर बड। डी टा होची ठीक उत्तर। आलोचना करिबा 36 नंबर प्रश्न जोटा अछि तम मोबाइल स्क्रीन उपरे। डबल फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन द प्लांट्स दैट इंक्लूड्स। ऑप्शन ए, syngamy and triple fusion। B, only triple fusion। C, development of antipodal cells। D, none of the above। 36 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज syngamy and triple fusion। ऑप्शन ए टा होची ठीक उत्तर। 37 नंबर प्रश्न। Which statement is true for angiosperms? Option A, microspore is the resultant of mitotic division। B, microspore is the first cell of gametophytic generation। Option C, microspore is the resultant of double fertilization। Option D, microspore is the first cell of endosperm। 37 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम इट इज ऑप्शन बी, microspore is the first cell of gametophytic generation। बी टा होची ठीक उत्तर। 38 नंबर प्रश्न मोबाइल स्क्रीन उपर तुम अच्छी। 38 नंबर प्रश्न है इन द मोनोकोटिलेडन सीड्स the endosperm is separated from the embryo by a distinct layer known as। Option A, testa। B, alveolar layer। Option C, tegmen। Option D, scutellum। 38 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन बी, alveolar layer।
ऑप्शन बी टा होची ठीक उत्तर 39 नंबर प्रश्न ए हाइब्रिड वेयर द cytoplasm of two parental cells are fused by retaining only one parental nucleus is called dash. Option A, a symmetric somatic hybrid. Option B, cybrid. Option C, an interbreed. Option D, symmetric somatic hybrid. 39 नंबर प्रश्न 39 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची ऑप्शन बी इट इज कॉल्ड साइब्रिड 40 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा बे 40 नंबर प्रश्न कोन Type of pollination in Commelina is dash. Option A, chesmogamy. B, zytonogamy. C, xenogamy. D, cleistogamy. 40 नंबर प्रश्न 40 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज कॉल्ड cleistogamy. D टा होची ठीक उत्तर कंटिन्यूअस सेल पॉलिनेशन ऑफ ए स्पेसी डेवलप्स 41 नंबर प्रश्न ऑप्शन गुडी कला स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग बी वीक ऑफस्प्रिंग सी सीडलेस फ्रूट्स डी फ्रूट्स विथ मैनी सीड्स 41 नंबर प्रश्न र ठीक उत्तर हबो इट इज बी वीक ऑफस्प्रिंग 42 नंबर प्रश्न सेल्युलर टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑप्शन ए ओनली gymnospermous cell option B all plant cells C all eukaryotic cells D all bacterial cells 42 नंबर प्रश्न 42 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर होची इट इज ऑल यूकैरियोटिक सेल्स ऑप्शन सी टा होची ठीक उत्तर क्वेश्चन नंबर 43 43 नंबर प्रश्न वन एडवांटेज ऑफ क्लेस्टोगेमी is dash option A it leads to greater genetic diversity B seed dispersal is more efficient and widespread option C products parental type D each visit of a pollinator results in transfer of hundreds of pollen grain 43 नंबर प्रश्न रो ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन सी प्रोडक्ट्स पैरेंटल टाइप सी टा होची ठीक उत्तर 44 नंबर प्रश्न कोटिलेडन्स एंड टेस्टा रेस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट्स इन dash ऑप्शन ए cashew nut and lychee option B groundnut and pomegranate C walnut and tamarind D French bean and coconut 44 नंबर प्रश्न रो ठीक उत्तर हबो इट इज ग्राउंडनट एंड पोमेग्रेनेट सो ऑप्शन बी टा होची ठीक उत्तर 45 नंबर प्रश्न आलोचना करिबा बिरे 45 नंबर प्रश्न कोन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ marked climatic variation plant growing near the seashore do not produce annual rings option B the age of the plant can be determined by ill height C grafting is difficult in monocot plants as they have scattered vascular bundles option D healing of damaged tissue is because of activity of sclerenchyma cells 45 नंबर प्रश्न रो ठीक उत्तर होची ऑप्शन सी grafting is difficult in monocot plants as they have scattered vascular bundles question number 46 a sporopollen is chemically called dash option A fatty substance B homopolysaccharides option C proteins option D heteropolysaccharides 44 नंबर प्रश्न रो ठीक उत्तर होची इट इज ऑप्शन ए फैटी सब्सटेंस तो एटा होची ठीक उत्तर पिले क्वेश्चन नंबर 47 47 नंबर प्रश्न कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट sporopollenin is false option A hexane is made of sporopollenin B sporopollenin is most resistant organic material C hexane has apparatus called germopores where sporopollenin is present option D sporopollenin can withstand high temperature and strong acid 47 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हबो ऑप्शन सी hexane has apertures called germ pores where sporopollenin is present question number 48 a dilocotyledonous embryo consists of dash option A radicle only B embryonal axis only C cotyledons only D radicle embryonal axis of cotyledons question number 48 answer hobo option D radical embryonal axis and cotyledons D टा होची ठीक उत्तर question number 49 49 नंबर प्रश्न in which of the following kinds of ovules the embryo sac is horseshoe shaped option गुडी कला option A
हेमिट्रोपस ओव्यूल्स बी, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स सी, एम्फिट्रोपस ओव्यूल्स डी, सार्सिनोट्रोपस ओव्यूल। 49 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम इट इज सी, एम्फिट्रोपस ओव्यूल। शेष प्रश्न पिले 50 नंबर प्रश्न। Apomistic embryos in citrus arise from dash. Option A synergids, B maternal sporophytic tissues, D antipodals, D egg cells। 50 नंबर प्रश्न 50 नंबर प्रश्न ठीक उत्तर हम इट इज कॉल्ड मैटरनाल स्पोरोफाइटिक टिश्यू। बीटा हूँ ठीक उत्तर। सो पिले दैट्स ऑल फॉर द डे। बोटनीर 50टा प्रश्न तुम आशा करुच्ची दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू। स्टे इन मास्टर इंग्लिश।